All right, big news coming in. Probe into Aam Aadmi Party MLA's poaching claim is now escalating. After Arvind Kejriwal, the crime branch team has reached Atishi's home. This is the Delhi police team that is at Atishi's residence. This is the big breaking news on your screens right now. Remember, Arvind Kejriwal has not only refused the summons of the Enforcement Directorate in the liquor policy case, saying these are illegal attempts to get him arrested and topple the government, but now Minister Atishi is also likely to receive a notice. Now, this is different. This is not liquor policy. This is with regard to the poaching allegations that have been made by the Aam Aadmi Party, that the BJP is trying to poach 7 of their MLAs. Now, the Delhi police has sent out a notice to Arvind Kejriwal and was expected to Minister Atishi. You're looking at the latest visuals on your screen. In the corner, in the center are the file visuals, and just to give you a background, Arvind Kejriwal has received the ED summons 5 times and now a Delhi police notice on the poaching allegations. Basically, the allegations that when Aam Aadmi Party had said that the BJP is trying to poach our MLAs, Delhi police is asking, where's the evidence? Give us the evidence, show us about what poaching claims that you're making, what is the reason behind it. And now you can see the fresh visuals. This is Central Delhi, where Minister Atishi is residing. And this is an official accommodation where the Delhi Police Crime Branch officials have reached. We'll try and get you the latest from our reporters on the ground as well. But this was expected. There were already, through our sources, information had been confirmed that the Delhi Police, after sending a notice to Arvind Kejriwal, has sent one to Atishi as well. Remember, it's a notice for now. Arvind Ojha is giving us update from the ground. Let's listen in. और जरूरत पड़ने पर वो ऑडियो क्लिप देंगी। अभी आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। ये अतिशी का सरकारी आवास है और इसी आवास के अंदर क्राइम ब्रांच की वो टीम जो कल अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस थमाने के लिए पहुंची थी, वो टीम यहाँ पर पहुंची है और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। हालांकि हमें जो जानकारी मिली है आशुतोष की, फिलहाल अतिशी अपने इस सरकारी आवास पर मौजूद नहीं है, लेकिन टीम यहाँ पर पहुंची है। बहुत मुमकिन है कि जो अतिशी के अधिकारी यहाँ पर हो, उनके सरकारी अधिकारी हो, उनको क्राइम ब्रांच की टीम वो नोटिस सर्व करेगी। मुश्किलें कहीं ना कहीं ये जरूर बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे अतिशी हो और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, उन्होंने ये बाकायदा बड़ा आरोप लगाया था। उसके बाद जो बीजेपी, दिल्ली बीजेपी की जो तमाम लीडर थे, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पहुंचे थे, उन्होंने शिकायत दी थी, जिसके बाद कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को टास्क दिया कि पूरी इंक्वायरी पूरी All right, that's Arvind Ojha telling us he's right outside the residence of Atishi, where a notice has been sent. Now, Kejriwal basically had not named the BJP. I want to correct myself here. Kejriwal had basically claimed that they contacted. Now, he's saying Aam Aadmi Party, 7 Aam Aadmi Party MLAs were contacted by them and offered 25 crore rupees to cross over so the government in Delhi could be toppled. Anmol Bali is joining me on the latest on that. Anmol, Delhi police notice has been served by the crime branch. Officials are there. But can this lead to any sort of arrest or trouble for Atishi? This is, if I'm correct, a notice only that is being given to explain for the evidence. Atishi, this is just a notice, and the crime branch team is inside the residence of Atishi Malina. I'll show you in the visual. The crime branch salutes are there inside the residence of Atishi Malina. Yesterday it was seen that after 5-hour high voltage drama, a same kind of notice was served to Chief Minister Arvind Kejriwal. And on the 2nd of February, the crime branch team visited the residence of CM Arvind Kejriwal in the matter which pertains to the poaching. On 30th January, Delhi BJP chief met Delhi Police Commissioner Sanjay Arora, where he said and asked them to interrogate and investigate into the matter of poaching, where Aam Aadmi Party accused Bharatiya Janata Party, Saffron Party, of poaching their MLAs, where Aam Aadmi Party said that the Bharatiya Janata Party has offered rupees 25 crore to their 7 legislators, and after arresting Arvind Kejriwal in the ED case, they will poach more than 21 MLAs and they will try to break their party. And after that matter, now Delhi police team has come here. This is just a notice, and according to our sources, arrest could not take place, but yes, this is just a notice. Pooja. Right, so this is a notice Anmol Bali is telling us about. Anmol, stay on with me. So Delhi Crime Branch has now sent a notice of asking for evidence.
who were you contacted by? Because remember, at this point, the poaching he's referring to is illegal, and therefore, who was trying to ask you to defect to other party? Was there any criminal sort of proceedings involved here? All of that is why the Delhi Crime Branch is here, but the Aam Aadmi Party has been claiming they just want to get us arrested so that they can topple the government in Delhi. Anmol, tell us what time did the Delhi Police Crime Branch officials come in at the residence? Stay on with me. Arvind Ojha is joining us with a ground report. Listen in. ब्रांच की टीम अब पहुंची है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और जो क्राइम ब्रांच के अफसर हैं फिलहाल वो इंक्वायरी कर रहे हैं. Anmol, yes, go ahead. Tell me, what time did the team reach? How many personnel are there? 10 to 15 minutes ago, a team of a crime branch reached here with around 5 to 6 personnel. They entered into the home of Cabinet Minister of Delhi, Atishi Marleena, and they are here with clear questions that who are those 7 MLAs who were offered rupees 25 crore, and who are those 21 MLAs with whom the Bharatiya Janata Party is in contact, in what mode they asked for the payment, and who was the person who contacted the Aam Aadmi Party MLAs for the poaching. Pooja. All right, Anmol Bali telling us about the poaching allegations that now has a notice that has been sent to by the Delhi Police Crime Branch to Minister Atishi. But remember, these were claims, and basically the Delhi Police Crime Branch intends to know who was offering them, what was the reason, and what evidence do we have. Arvind Ojha is joining me now on this. Arvind, कितनी देर पहले ये टीम आई और क्या रीजन है? पार्टीज तो क्लेम करती रहती हैं अरविंद कि हमें इन्होंने पोच किया, उन्होंने बुलाया, ये हमको हमारे मेंबर्स को लेना चाह रहे हैं. अरविंद, कैन यू हियर मी? गो अहेड. तो क्या रीजन है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स पहुंच गए नोटिस लेकर आतिशी के घर? All right, it looks like the communication has not been established by Arvind. Arvind, if you can hear me, go ahead. Otherwise, we'll tell our team to ensure that the communication is back on. Okay, perfect. Arvind, tell me this, that नेता तो हर तरह के एलिगेशन और क्लेम कहते हैं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच नोटिस लेके क्यों पहुंच गई? नहीं, देखिए, जो क्लेम किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बकायदा जो बीजेपी है उसने 7 एमएलए को कांटेक्ट किया है, 25 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं, और ऑडियो क्लिप भी है आम आदमी पार्टी के पास. उसके अलावा 21 एमएलए जिनको संपर्क साधा गया है पार्टी तोड़ने के लिए. ये जब एलिगेशन लगाए गए, और जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया. इंक्वायरी इस बात की हो रही है कि क्या जो आम आदमी पार्टी को कांटेक्ट किया था वो लोग कौन है, ये जानकारी, ये कांटेक्ट किया जा रहा है. इसी वजह से आतिशी के घर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं, विजुअल दिखाते हैं कि जो एसीपी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हुए थे नोटिस देने के लिए, कल उनको नोटिस सर्व किया गया था, वही टीम क्राइम ब्रांच की आज आतिशी के घर पर पहुंची है. हालांकि आतिशी फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है. तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच है वो इंक्वायरी इस बात की कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगाया था वो लोग कौन है. कल अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया, 3 दिन का उनको वक्त दिया गया, उनसे पूछा गया है कि वो लोग कौन है जिन्होंने आपके एमएलए से कांटेक्ट किया था, क्या कोई ऑडियो है, क्या वो एविडेंस है, तो वो जरूर क्राइम ब्रांच को दे, वो उसकी इंक्वायरी करेगी. उसके अलावा 21 एमएलए वो कौन है उनकी डिटेल्स दी जाए, किस तरह से कांटेक्ट किया गया, किस तरह से पैसे दिए गए, कौन से वो नंबर थे, तो तमाम वो एविडेंस मांगे गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ताकि क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट कर सके कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके एमएलए को कांटेक्ट किया और पार्टी तोड़ने की कोशिश की, जो जैसा एलिगेशन था. तो फिलहाल अरविंद, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन विद मी.